There are tales of abject suffering trickling in from across the country. This comes in from Uttarakhand, where after the Kumbh Mela, the coronavirus has now gone into the villages of the mountains of Uttarakhand. However, there are not enough cremation grounds, resulting in mass cremations deep inside forests in Uttarakhand. My colleague Aishwarya Paliwal with this report. In the forest, in the open. The stigma attached to COVID is bringing out the most desperate side of humanity. Mass cremations are taking place in the open in the hills of Uttarakhand's Almora, as crematoriums are refusing to accept bodies because of a fear of the virus. Relatives of the dead are arranging funerals wherever they can, picking up wood for pyres. Local authorities have washed their hands off, again fearing the virus. Chandan Rawat's father died 5 days after getting infected. He may have survived had there been drugs available. आंकड़ा बढ़ता जा रहा है फिर हम तो दूर के रहने वाले हैं तो हमारा ये 4-5 दिन से हुआ था इसकी तबीयत खराब 3-4 दिन से कल क्या हुआ था तबीयत खराब में क्या हुआ बुखार आया था और नाक से ब्लड निकलने लग गया था आपके गांव के अंदर दवाइयां मिल रही हैं दवाइयां तो कहाँ मिलती हैं वहाँ नहीं मिल रही सर No crematorium was willing to carry out the funeral rites. Rawat could not even give his father a dignified funeral. I'm in Almora, where the death toll is rising every day. And with nowhere else to go, the villagers are now coming out in the open, wearing PPE kits and then cremating their loved ones. The death toll is rising every day, and villagers are of the opinion they are getting no help from the government. For 35-year-old Munna Lal, the last 10 days have been a nightmare. His father was suffering from COVID and was finally admitted to a hospital after 9 days of severe illness. 24 hours later, he was dead. Munna Lal had to cremate him in the open. मेरे पिताजी 10-15 दिन से बुखार और जुकाम था और कल से कुछ ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई फिर हम लाए उनको यहाँ अल्मोड़ा फिर कल शाम उनकी डेथ होगी खाली श्वास था श्वास The residents of the hills have been desperately pleading for help, but there's nobody in the local administration who's listening. The reason why they are doing the cremation in this manner is because there's a lot of stigma attached. In fact, if we are to believe the data, close to 16,000 active cases are there in rural Uttarakhand at the moment. And out of those 16,000 cases, 14,000 are isolating at home. Villagers are still waiting for medical aid. And they say if medical aid is not given in time, the death toll will rise and we will see these kind of visuals coming from every district in the state of Uttarakhand. This is Aishwarya Paliwal reporting for India Today with camera person Parminder Sharma. While the first wave was kinder to the rural belt of India, the second wave has been most brutal. Now stories coming in from Uttar Pradesh's rural belt are crippling, where cases are mounting, but they're all suspect COVID. Suspect because most are displaying signs of coronavirus, but there are no tests. COVID because most die with the want of oxygen. Take a look at this report from Samesi, Uttar Pradesh. Village after village in Uttar Pradesh is crying out. They have similar stories to share. In Samesi, a quiet village close to Lucknow, at least 80 people have died. The villagers allege they died of COVID, as they had shown symptoms similar to SARS-CoV-2. Muhammad lost 2 members in his family, his grandfather Yar Muhammad and grandmother Zamiulan. Muhammad claims the patients were taken to the hospital but were sent back. Both succumbed later. उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और डॉक्टर कहने से हमने सारी जांच करवाई उसने जब बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर कमी है तो हम सिलेंडर लेके आए सरकारी में गए थे वहाँ कुछ नहीं हुआ मतलब क्या जैसे कि वहाँ हम लोग पहुँचे तो बता दिया कि वहाँ केवल डिलीवरी ले रहे हैं और कोई कम नहीं हो रहा अच्छा वहाँ इलाज नहीं कर रहे Maya Ram's wife Dashrati Devi too developed COVID symptoms. She was tested for COVID. Since then, she has passed away.
But according to the family, the test result is awaited. जब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो क्या आपने कोरोना का टेस्ट कराया था? उसके पहले कराया। कहाँ से कराया था? नगराम सरकारी में। इसकी रिपोर्ट आपको मिली? कुछ नहीं मिला। In adjoining Sarsawa village, residents claim 20 deaths due to COVID symptoms. The health infrastructure is in shambles in the village. This is a health center, usually basically for children and women, but the scenario out here is very, very dangerous, risky. You can see a lock and a roster out here posted on the door, which says that it is the third Wednesday when there will be vaccination process of pregnant women, and also the newborn children will take place, but nothing is happening out here. The village lacks testing facilities, despite the state government's repeated claims of random testing. यहाँ टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों के हालात बहुत ही बद से बदतर है। ये महिलाओं का बच्चों का मातृ शिशु केंद्र है। हम लोगों की गर्भवती महिलाएं यहाँ टीका वीका लगवाती थी पहले, अभी करीबन साल भर हो गया है। हमने यहाँ बैठते हुए ना मैडम को देखा है ना किसी को देखा है। टेस्टिंग वगैरह कोई नहीं शुरू हुई, और बाकी जो मातृ शिशु केंद्र जो एनएम लोग आती हैं तो बच्चों के टीके लगभग लोगों के लगभग 100% लोगों के टीके लगभग लेट हो चुके हैं। The district authorities claim they are reaching out to the people and addressing their grievances. हमारी टीम जो है वहाँ पे घर घर जाके सर्वे कर रही है, और सर्वे करके वहाँ पे जो लोग लक्षण युक्त हैं उनको हम लोग होम आइसोलेट कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करा रहे हैं और उनको दवा की किट भी दे रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमको स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड कराई गई है। People in rural Uttar Pradesh continue to suffer due to lack of health facilities. As the government scrambles to provide care, people hope the worst is over and the fall in infection holds. With Samarth Srivastav in Lucknow, Bureau Report, India Today. This is a report from Rajasthan's Jhunjhunu district, where one wedding went on to become a super spreader event. Many of the 150 attendees tested corona positive. The father of the bride died of coronavirus. My colleague Moshmi with this report. Hello and welcome. You're watching India Today, and India Today is getting you this ground report from the rural hinterland. We are in Rajasthan and our first destination is Jhunjhunu. We are going to get you what's happening and unfolding on ground zero. The silence in this village is deafening. There are no children playing gilli danda, no cheer, no chatter. Just deserted streets, shut doors, a peep through a window, or a reluctant gaze from the terrace. Sialu village is living its worst nightmare. हमारे गांव में एक साथ ही 157 केसेस जो हैं वो सैंपल लिए गए, उसके बाद में 95 केस जो हैं वो पॉजिटिव निकले। तो ये जो रीजन रहा है उसका हमारे 25 अप्रैल की 3 शादियां थी गांव में, तो उसके बाद से हमारे मतलब कोई पॉजिटिव केस निकला है। पॉजिटिव आने के बाद लोग एकदम से घबरा गए, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं। 95 positive cases in a single day. The danger and the damage is very real and present. Nicely dented and painted, this is the local health center at Chalukala village, and what you see is a good building but a lock outside the gate. That is the state of affairs in the rural part of Rajasthan, where a village is battling with COVID. इंजेक्शन लगाने के भी हमको बाहर जाना पड़ता है, जिनकी गाड़ी बुलानी पड़ती है उसको 200-300 रुपए देते हैं। On 25th April, the village saw 3 weddings. As celebrations ended, the disease spread its tentacles. And the first victim was the father of the bride, Pappu Singh. Usually when it rains in Rajasthan, it is a celebration time. But this time, the rains have added to the gloom that is actually enveloped this village. And this village is a village where it all started with wedding celebrations, because March, April, May is a time when Rajasthan sees a lot of weddings, dozens happening together.
We're standing at the entrance of one such house. They've lost their brother after a wedding celebration of their daughter. The father left the world being infected by COVID. मुश्किल तो है, अभी भाई गया है, मुश्किल तो है। बच्चे हैं अभी, 3 लड़के हैं, उसका 1 लड़का है। 2 लड़की की शादी कर दी है, उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव थी। तो आप लोगों को लगा सब कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक है। कार्डियो अटैक आया हुआ। हमारे गांव से हम लोग अगर बाहर जाने की कोशिश भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ है कि हमारे गांव के नाम से डरते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती है। तो अगर किसी दूसरे से हम हेल्प लेने की कोशिश भी करते हैं तो वो लोग भी डरे हुए हैं कि भाई ये पॉजिटिव लोग हैं। अभी तक हमारी साइड तो आप ही आए हो, इधर आता नहीं कोई। ये देखिए खूब खा रहे हैं, आसपास के लोगों हमारे पास रुकते नहीं है। हम लोग अपील करना चाहते हैं कि सरकार से कि हमारे सब लोगों की दोबारा से सैंपलिंग हो। हमने आज मेडिकल नर्सिंग स्टाफ से बात की तो उन लोगों ने हमें मना कर दिया कि आप लोग सूरजगढ़ जाएं और वहाँ पे जाके आप अपनी जांच करवाएं। तो 95 लोग जो हैं वो कैसे जा सकते हैं? As they are being alienated and cast away from the society, they need better medical attention. And India today is on ground zero. The sole purpose is that we can be the voice of the voiceless. The villagers have been left in the lurch without proper healthcare and medical facilities. The uncertainty of life shrouding all hope. As we move around, a restless Vimla peeps from behind her entrance door. Her son Daulat had tied the knot on that fateful day. Now her family is positive and life has come to a standstill. हाँ, दवाई दे के गए थे हम लोग को, लेकिन उसके बाद में कोई भी नहीं आके देखा हम लोग को। गाड़ी भी कोई भी इधर आके नहीं देखते कोई भी। लेकिन अभी बच्चे तो बिस्कुट भी चाहिए, हम लोग को दूध भी चाहिए, घर में कुछ भी सामान चाहिए, सब्जी चाहिए, कुछ तो चाहिए ना, लेकिन उसके बाद में कोई आए नहीं। The women open up about the trauma of being locked without supplies. अलग रहने के लिए बोल के गए, लेकिन हम बच्चों अभी छोटे बच्चे तो अलग कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। डर तो लगता है, क्या पता हमारे बच्चे को नहीं हो जाएगा, डर तो लगता है ना सबको। और अभी ऐसे डर भी तो बढ़ा हुआ है ना सब गांव में। अब इधर मौत हुई तो हम लोग परिवार में हमारे में है, लेकिन हम 2 मिनट जाने के लिए भी हम लोग को नहीं हुआ। अभी उसको भी लगा है कि अपने परिवार के होके अपने घर पे नहीं आए, लेकिन हम नहीं जा पाए। बच्चे लोग परेशान हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं, खाने पीने के लिए हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, सभी रोते हैं। अंदर दुकान में जाएंगे तो सभी लोग बोलते हैं इनमें पॉजिटिव है, ये सब डरते हैं देने के लिए। Recently, the Rajasthan government tightened restrictions on wedding celebrations, limiting the gathering to just 11 people and slapping a fine of 1 lakh rupees on violators. But it was already too late by then. The father of a bride had passed away, 95 out of 150 were positive, and grief and shock had overcome the initial joy. Their worst fears have come true. As these women grapple with their present, their future holds a big question mark. What has made matters worse is that they are away from the attention of the politicians and the glare of the national media. With video journalists Satya Rotre and Ashok, this is Mosmi Singh in Jhunjhunu for India Today. The rural belt of each state is suffering, viewers. It's not that one state governed by a particular party is the only state which is suffering. It's across the board. COVID has been the biggest leveler. This story coming in from Punjab, the home district of the Chief Minister, Patiala. My colleague Satyendra Chauhan with this report. The virus is now spreading to rural India. Hinterlands are turning out to be new epicenters of the deadly pandemic. In the Punjab Chief Minister's home district, Patiala, there have been more than a dozen deaths in Dhablan village. Testing hesitancy among the rural population has been a major obstacle. Oddly, one reason for not getting tested was the anger among farmers against the centre's new laws. And the health workers who went to the villages had to face the heat. किसान आंदोलन की वजह से जो गांव में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो गुस्सा हम पे निकालते थे, इसलिए वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे ऐसी कोई बीमारी है। जब ये बहुत फैली, लोग बहुत बीमार होने शुरू हुए, तब जाके हमारी उन्होंने बात सुननी शुरू की है। With cases on the rise, the objection against testing is evaporating.
ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ पहले टेस्टिंग की ਡਰਦੇ ਥੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਡਰਦੇ थे ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ हम खुल के आ रहे हैं टेस्ट कराने खुद खुश होकर सारा परिवार करवा रहा छोटे छोटे बच्चों ने भी करवाते Thablan village has been totally sealed now and declared a containment zone. Karamjeet Kaur has been tasked with providing health services in Thablan. Tragically, she lost her husband to the virus recently. लोगों के घर मोटिवेट करने जाते थे पर अपने घर वाले ख्याल नहीं दिता। तो आपको कैसे पता चला कोरोना पॉजिटिव हो गए? नहीं जी सानू कोई पता नहीं चलिया जी जदों बहुत सीरियस हो गए ऑक्सीजन बिल्कुल घट गई मैनू डिस्पेंसरी च सर ने बुलाया इन्होंने आके देखे तो इन्होंने मैनू रजिंद्रा COVID-19 spread to Punjab's village is a cause of concern. Like most rural areas of the country, there is a huge gap when it comes to medical facilities. The big worry is that the lack of specialist advice could see many more deaths in the interiors of the state. With Satyendra Chauhan, Bureau Report, India Today. Coronavirus is now spreading to the Bamiyal borders of the Pathankot area. While local authorities say that the health infrastructure is adequate in dealing with the crisis, our ground report tells a very different story. It has been 13 years since this dispensary had been last opened. That is what the local people of village Makhanpur are claiming. 13 years since the doors of this meager facility were thrown open. 13 years since it got cleaned and staffed, ready to dispense health in this corner of India. ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ Makhanpur lies along the international border with Pakistan, one of the 50 villages that have to rely on a mere 5 health centers, with most of the dispensaries under those health centers closed. Some of these villages are almost on the actual line separating India and Pakistan. And with the pandemic raging on both sides of the border, people are at the mercy of chance rather than medicine. कोई टेस्ट नहीं आया कोई डॉक्टर नहीं आया कोई टीम नहीं आई At Makhanpur village, the freshly reopened dispensary has one oxygen cylinder to be used in case of an emergency. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ For these villages and their people, when health takes a serious turn, or if a COVID-infected patient needs hospitalization, then the only option is the civil hospital at Pathankot, 30 kilometers away. The Pathankot civil surgeon, however, claims that things are not as bad as they are being made out to be. ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹਫ਼ਤੇ 4 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ CHO ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ CHO ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੇ 4-5 ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ANM ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ The border is no different than the interiors. This fan that is being mended is symbolic of the healthcare system that is available. Old, discolored, and in need of immediate attention. This report, filed by Pawan Singh from Makhanpur village on the Indo-Pak border near Pathankot, for India Today TV. With that, it's a wrap on this edition of Suffering Diaries, but we're going to continue to get you stories from across the country right here every day at 7 p.m. A quick break.